अभिवादये अहमस्मि गवीशद् द्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। बिहार राज्ये महासंयुत्यै समाह्वान विशेषः। झारखंड मुक्तिमोर्चा इत्येतेन दलेन 6 विधानसभासनेषु नैर्वाचनिकसहभागितायै उद्घोषणं विहितम्। द्वितीयचरणार्थं श्वः भविष्यति नामाङ्कनस्य अन्तिमं दिनं। महासंयुत्याम् आसनावण्टनक्रमः एतावतापि नास्ति स्पष्टः। बिहार विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणगतानां प्रपत्राणां परीक्षणं पूर्णम्। 67,400 संख्याकानां प्रत्याशिनां नामाङ्कनानि निरस्तानि। मढौरतः लोजपा रामविलास इत्येतस्य दलस्य प्रत्याशिन्याः भोजपुर्यभिनेत्र्याः सीमा सिंहस्य नामाङ्कनं निरस्तम्। अयोध्यायां भव्यदीपोत्सवस्य सज्जता प्रवर्तमाना। 28 लक्षदीपैः प्रदीप्ता भविष्यति श्रीरामनगरी। दिल्ल्यां तावत् सार्धैकलक्षदीपप्रज्वालनपुरस्सरं दीप्तः जातः कर्तव्यपथः। पाकिस्तान अफगानिस्तान इत्येतयोः देशयोः संघर्षविरामे सहमतिः। दोहा इत्यत्र कतर तुर्की इत्यनयोः मध्यस्थताकारणेन अभवत् सहमतिः। भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः मिथः त्रिस्पर्धान्वितायाः एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडा श्रृङ्खलायाः अन्तर्गतं पर्थ नगरे प्रथमा स्पर्धा अद्य। शुभमन गिल इत्येतस्य नायकत्वे क्रीडाङ्गणम् अवतरेत् भारतीयं दलम्। सम्प्रति च वार्ताः विशदीकृताः। बिहार विधानसभा निर्वाचनात् पूर्वं महासंयुत्यै झारखंड मुख्यमन्त्रिणा हेमंत सोरेन इत्यनेन बृहत् समाह्वानं प्रदत्तमस्ति। एकतः तु महासंयुत्याम् आसनावण्टनक्रमे कापि स्पष्टता आप्यमाना नास्ति। अपरतः झारखंड मुक्तिमोर्चा इत्येतस्य दलस्य प्रमुखेण उद्घोषणं कृतं यत् बिहारराज्ये 6 आसनेषु तदीयं दलं प्रत्याशिनां नामानि उद्घोषयेत्। झारखंड मुक्तिमोर्चा इत्येतत् दलं येषु 6 आसनेषु प्रत्याशिनां नामोद्घोषणं कुर्यात् तेषु चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, पीरपैंती, जमुई इत्येतानि आसनानि सम्मिलितानि सन्ति। बिहार निर्वाचनार्थं कांग्रेस दलेन इतोपि एका सूचिः प्रकाशिता अस्ति। एतस्यां सूच्यां कांग्रेस दलेन 6 प्रत्याशिनां नामानि उद्घोषितानि सन्ति। नरकटियागंज विधानसभासनतः शाश्वत केदारपाण्डेयः कांग्रेस प्रत्याशी भवेत्। सः तत्रैव किशनगंज विधानसभासनात् मोहम्मद कमरुल हुदा इत्यसौ नैर्वाचनिकचिटिकाम् आप्तवान्। गया टाउन विधानसभासनतः मोहन श्रीवास्तवः, अपरत्र पूर्णिया विधानसभातः जितेन्द्र यादवः कांग्रेस दलपक्षतया निर्वाचन संगरे सहभागं कुर्यात्। श्रीराम जन्मभूमिः अयोध्या नगरी ऐषमः दीपोत्सवस्य भव्यायोजनार्थं सज्जा अस्ति। यतः अयं दीपोत्सवः भारतस्य सांस्कृतिकाध्यात्मिकपञ्चाङ्गक्रमे नूतनम् अध्यायं संरचयति। तावत् अयोध्यानगरी लक्षाधिकैः मृत्तिकादीपैः समं प्रकाशयुता भवेत्। पवित्रायाः सरयूनद्याः तटे मनोरमं हि दृश्यम् एतत् जनानां चित्तं निस्सन्देहम् आकर्षयेत्। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता इत्यसौ कर्तव्यपथे आयोजिते रामायणविषयाधृते दीपोत्सवसमारोहे अथ लेजर ड्रोन शो इत्येतस्मिन् प्रदर्शने सहभागम् अकरोत्। आयोजने सार्धैकलक्षाधिकाः दीपाः प्रज्वलिताः आसन्। दीपप्रज्वलनेन, भव्येन ड्रोन इति नभोयन्त्रगतेन प्रदर्शनेन, रामकथया अथ सांस्कृतिकप्रस्तुतिभिः कार्यक्रमः एषः भव्यः स्मृतिशीलः च संवृत्तः इत्यस्ति विशेषः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अथ उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः लखनऊ नगरे ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट इत्यत्र निर्मितानां ब्रह्मोस इत्येतेषां
प्रक्षेपणास्त्राणां प्रथमनिर्मितये हरितध्वजं प्रदर्शितवन्तौ। ब्रह्मोस् इत्येतत् विश्वस्य सर्वतः तीव्रं प्रहारकयुतं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इत्येतत् प्रक्षेपणास्त्रमस्ति। ब्रह्मोस् प्रक्षेपणास्त्रं समेधमानानां स्वदेशगतक्षमतानां प्रतीकभूतमस्ति इति रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः तत्र अभिव्यक्तवान्। सिर्फ एक मिसाइल के प्रोडक्शन से मिलने वाले टैक्स से सरकार कई स्कूल बना सकती है, कई हॉस्पिटल खड़ी कर सकती है और ऐसी योजनाएं भी सरकार चला सकती है जो सीधे आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाए। यानी ब्रह्मोस सिर्फ हथियार नहीं है, यह हमारे बच्चों के लिए शिक्षा, हमारे परिवारों के लिए हेल्थ केयर और पूरे समाज के लिए एक अवसर का रास्ता भी खोलता है। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में यह सिनर्जी और मजबूत होगी और ब्रह्मोस जैसी परियोजनाएं न सिर्फ हमें दुश्मन पर बढ़त दिलाएंगी बल्कि हर भारतीय नागरिक के जीवन में नई रोशनी भी लेकर आएंगी। उत्तराखंड राज्यस्य मसूरी नगरस्थितायां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्राशासनिक अकादम्यां भारत दिवस समारोहः आयोजितं गतः। केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू इत्येषः सम्बद्धे कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण सम्मिलितः अभवत्। अनुक्रमं तावत् केन्द्रीय मंत्री देशसेवायाः भावयुतेभ्यः प्रशिक्ष्वधिकारिभ्यः प्रेरकवचनानि अपि कथितवान्। एतस्मिन् कार्यक्रमे अकादम्याः निदेशकः श्रीरामतरणिकान्तिः, सर्वे प्रशिक्ष्वधिकारिणः अथ संकायसदस्याः समुपस्थिताः अभवन्। रशिया देशस्य प्रवासक्रमे जम्मूकश्मीरप्रदेशस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा इत्येषः कल्मीकिया इत्यत्र भगवतः बुद्धस्य पवित्रावशेषाणां प्रदर्शनीम् अवलोकितवान्। तत्र असौ गोल्डन अबॉर्ड ऑफ बुद्ध इत्याख्ये शाक्यमुनिमठे भगवतः बुद्धस्य पवित्रावशेषेभ्यः श्रद्धापूर्वकं नमनमपि कृतवान्। तदनु असौ आयोजितस्य कार्यक्रमस्य समापनकाले बौद्धभिक्षुभिः श्रद्धालुभिश्च सह संवादं साधितवान्। एतेन सहैव असौ कथितवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समस्ते हि विश्वे बुद्धस्य सन्देशान् मूल्ययुतान् कथयति इति। अवधातव्यमस्ति यत् उपराज्यपालः मनोज सिन्हा भगवतः बुद्धस्य पवित्रावशेषान् भारतं प्रत्यानेतुं प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं विदधाति। भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी दुनिया के किसी देश में गए तो इस बात पर उन्होंने सदैव बल दिया है कि आज दुनिया की समस्याओं का समाधान बुद्ध की शिक्षा में है। कल्मीकिया और भारत के बीच मैं समझता हूँ कि शायद ये पहली बार इस तरह का एक सहयोग बढ़ा है और इससे हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो संबंध हैं और प्रगाढ़ होंगे। कल्मीकिया के इस पवित्र मंदिर में भी मुझे आने का सौभाग्य मिला और जो भीड़ दिखाई दे रही है वो स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूँ कि भगवान बुद्ध का आशीर्वाद कल्मीकिया के लोगों को मिलेगा, रूस के लोगों को मिलेगा और भारत कल्मीकिया और भारत रूस का संबंध और प्रगाढ़ होगा। केन्द्रीय मंत्रिणः निर्मला सीतारामन वर्या, पीयूष गोयलः अथ अश्विनी वैष्णवः वस्तु सेवाकर परिष्करण संबद्धं संचयोत्सवं समाश्रित्य संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं विहितवन्तः। एतस्मिन् अवधौ केन्द्रीय वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन वर्या संसूचितवती यत् वस्तु सेवाकर परं जातं परिष्करणं जनाः समुचितविधिना आत्मसात् कृतवन्तः इति। तत्रैव केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः वार्ताहर सम्मेलने संसूचितवान् यत् एतस्मिन् वर्षे भारतेन स्मार्टफोन इत्येतेषां चलदूरभाषीयतन्त्राणां निर्यातकार्ये संयुक्तराज्य अमेरिका देशः अपि पुरस्कृतः। तावत् भारताय इयं हि बृहत्तमा उपलब्धिः अस्ति। तत्र च केषाञ्चित् समवायानां प्रायशः प्रतिशतं 20% उत्पादनम् अधुना भारते एव भवति इति अवधानयोग्यः विषयः। पाकिस्तान अफगानिस्तान देशौ तात्कालिके संघर्षविरामे सहमतिं प्रकटितवन्तौ। दोहा इत्यत्र कतर तुर्कीय गणराज्ययोः मध्यस्थताकारणेन एषा सहमतिः अभवत्। तावत् संजाते वार्तावधौ उभौ देशौ शान्तिं स्थिरतां च स्थापयितुं सहमतौ जातौ।
भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः मिथः त्रिस्पर्धान्वितायाः एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडाशृङ्खलायाः अन्तर्गतं पर्थ नगरे प्रथमा स्पर्धा अद्य भवेत्। शुभमन गिल इत्येतस्य नायकत्वे क्रीडाङ्गणम् अवतरेत् भारतीयं दलम्। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।